11th class. Our today's topic of botany, it is metabolic fate and glycolysis. So far as dear students, we have lastly read what is glycolysis. In glycolysis we have read that glycolysis is the breakdown of glucose storage to release energy in the form of ATP. It is known as glycolysis. Glyco means glucose and lysis means breakdown. So far in this glycolysis, it is also known as EMP Cornish, named on the three scientists who discovered this pathway. For our today's topic is metabolic fate of glycolysis. Glycolysis has two phases: a preparative phase and the payoff phase. So far as the preparative phase concerned, it includes glucose, in which glucose is broken down to glyceraldehyde 3-phosphate, and payoff phase and the glyceraldehyde 3-phosphate is changed into pyruvate, producing nicotinamide and dehydrogenase and ATP. NADH and ATP, and the overall reaction of glycolysis can be depicted as glucose plus phosphate plus adenosine diphosphate, and NAD gives 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH plus 2H hydrogen. There is 2 molecules of NADH on oxidation produces 6 molecules of ATP. Therefore, a net gain of ATP molecules occurs during glycolysis. In glycolysis, there occurs a net gain of ATP molecules. And the fate of the end product glycolysis, that is pyruvate, is the end product or end product glycolysis. It is pyruvate, depends upon the availability of oxygen in the cell. In the presence of oxygen, pyruvic acid will enters. Pyruvic acid enters the mitochondria. It enters the mitochondria and goes complete oxygen glucose. In this case, complete oxygen glucose takes place to carbon and water in aerobic respiration. There is also known as Krebs cycle. तो जहाँ तक इस क्रिबस साइकिल का ताल्लुक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाता है और वहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीजन होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है in good amount. On the other hand, in absence of oxygen, the pyruvic acid will undergo anaerobic respiration, that is lactic acid fermentation or alcoholic fermentation. In absence of oxygen, the pyruvic acid forms lactic acid formation takes place in absence of oxygen, but this process takes place in the cytoplasm. Fermentation. Various microorganisms like yeasts and bacteria and even animals and plants are sometimes known to catabolize pyruvic acid incomplete into various organic compounds depending upon the specific enzymes they possess. इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, yeast हैं, बैक्टीरिया हैं, एनिमल्स भी हैं, और वो क्या होता है इसमें कैटाबॉलिक pyruvic acid होता है, इनकम्प्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है into various organic compounds depends upon enzyme they possess. Types of anaerobic respiration. Types of aerobic respiration. So far, the types of aerobic respiration includes alcoholic fermentation in fungi, that is yeast, and some higher plants. The incomplete oxygen of glucose is achieved under the anaerobic conditions. And pyruvic acid is converted to carbon and ethanol. इसमें क्या होता है कि फंजी और दूसरे हायर प्लांट्स में इनकम्प्लीट ऑक्सीजन ग्लूकोज चाहिए, इसमें जो ग्लूकोज होता है इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीजन होती है, तो अंडर एनाएरोबिक कंडीशंस इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड, पायरुविक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में, यहाँ पर इथेनॉल फॉर्म होता है इथेनॉल, और इट इज़ डन अंडर 2 स्टेप्स. इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. चलिए, पायरुविक एसिड इज फर्स्ट डिकार्बोजाइलेटेड एसिल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोजाइलेज. तो इसमें क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में. जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ होता है. तो इससे क्या होता है कि जो इसमें ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक होता है एसिल्डिहाइड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये रिलीज़ होते हैं किससे, ये रिलीज़ होते हैं पायरुविक एसिड से. इसमें इन द प्रेजेंस एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोजाइलेज, इसमें एक एंजाइम होता है पायरुविक एसिड डिकार्बोजाइलेज. तो इस तरह से जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है ये कुछ माइक्रोब्स में जैसे फंजी में, जैसे यीस्ट में ये हो जाती है. तो इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल. सेकंड इज द एसिल्डिहाइड इज देन अंडर फर्दर reduced to ethyl alcohol और इथेनॉल इन द प्लस एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. तो इसमें ऐसी प्रोसेस होती है कि जो ये होते हैं
इसमें क्या होता है कि इथेनॉल फॉर्म होता है, इथेनॉल, इसमें इथेनॉल फॉर्म होता है, इथेनॉल। तो इस तरह से इसमें रिड्यूस होता है, एसिडिहाइड जो होता है वो मज़ीद रिड्यूस होता है, इथर अल्कोहल इथेनॉल और इथेनॉल दैट इज सेम इन द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। इसमें एंजाइम जो होता है दैट इज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। इस तरह से इसमें फर्मेंटेशन में इसमें क्या होता है कि इथेनॉल फॉर्म होता है। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एज एंड प्रोडक्ट फ्रॉम पायरुविक एसिड। During the reduction, the pyruvic acid produced in the glycolysis is reduced by NADH to form lactic acid. Formylase is not produced and NADH is oxidized to NAD. This reaction is catalyzed by the lactic acid and dehydrogenase, FMN proteins and zinc ions. तो इस रिएक्शन में जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो इसमें यही प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है किससे? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लैक्टिक एसिड। तो इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस। इसमें लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस इन्वॉल्व होता है। तो लाइकवाइज इन केस ऑफ एनिमल सेल्स आल्सो सच एज मसल्स during exercise when there is inadequate amount of oxygen for cell respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactic acid dehydrogenase। तो इसमें भी क्या होता है जो कुछ एनिमल्स में होता है एक्सरसाइज के दौरान मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जब होती है ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, तो पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड चेंज होता है लेकिन इसमें बाय लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस। Thus, in both process, oxidation of reducing NADH plus H agents takes place। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।